So very good afternoon to all and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible. Just type yes on the chat box and the screen is visible to you all. So just type yes if my voice is audible and screen is visible to you all. So those who are attending this session from a WebEx channel, they can type in the chat section that our voice is audible, and those who are attending from YouTube sections, and there's a live chat box is there and they can type yes on the chat box. So we'll just start in kind of 30 seconds. So today session will be on the technical analysis. So we have, we have sent this notifications to all our customers about the technical analysis. Means what are the different candlesticks patterns are there, and how one need to predict the market movements using those candlesticks patterns. I'm having with me Mr. Karan Pai, who is a technical analyst, a research analyst, and he'll going to walk you through about the candlesticks patterns and the signals, followed by some of the charts that he'll going to showcase that how the Nifty 50 and the Bank Nifty is performing. And yesterday we have seen that Nifty 50 was trading around this 24,100, and today it is 100 plus, but today it is at 24,037 with a marginally like a 0.63% down, and Bank Nifty is around minus 1% down right now. So with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you now. गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन. सो आपने हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के नोटिफिकेशंस देखे होंगे ऐप पर, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दे माइट बी इंटरेस्टिंग. एंड अगर आपको कुछ उसके बारे में फीडबैक है, आपको कुछ उसमें चेंजेस चाहिए या कुछ आपका रिकमेंडेशन है कि हाउ टू इम्प्रूव इट या how to make sure that the delivery is slightly better or much better, then please put it in the chat box. We'll be more than happy to accommodate those changes. So हम लोग कैंडल पैटर्न्स की बात कर रहे थे, एंड वी हैव till date covered the different types of charts, the different types of कैंडल्स, द कैंडल फॉर्मेशंस, उनके बेसिस पे जितने भी चेंजेस होते हैं, आई मीन जो भी फॉर्मेशन है उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या वो पर्टिकुलर कैंडल फॉर्मेशन के बाद होता क्या है. वी हैव ट्राइड एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड इन द प्रीवियस वीक वी डिड अ फ्यू ऑफ देम. मतलब ऑन अ डेली बेसिस ये नोटिफिकेशन जाता है. सो दीज आर द फ्यू कैंडल पैटर्न्स दैट वी चेक. सो वन वाज 3 black crows, 3 white soldiers, 2 is a top, 2 is a bottom, and then we touch base on technical indicators. So आज का जो रहेगा, that will be the notification that we'll be receiving in the evening today. That would be different types of technical indicators. So I'll start off with 3 black crows. So we had briefly touched on this in our previous webinar also. So अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि 3 black crows is nothing but 3 bearish candles जो form होते हैं after a strong uptrend. Now इसे black crows क्यों बोलते हैं? Because one of the most commonly known reason is because negative candles are also represented in a shade of black, and along red and black both. So black and crows, because crows they dive down to prey on their food or catch their food. So that is why 3 black crows जो नाम आया है उसका. So what this basically states is, एक आपका strong up move रहता है. For example यहाँ पर हम लोगों ने जो है HDFC बैंक का एग्जाम्पल लिया है. HDFC बैंक में एक steady up move रहा है, and hypothetically एक steady up move रहा है, and then one fine day जो up move है वो थोड़ा exhaust हो जाता है, and then you see a gap down open, and gap down open होने के बाद there is follow through on the downside. फॉलो थ्रू मैंने आपको पहले भी बोला है, फॉलो थ्रू अगर आपका एक नेगेटिव मूव रहा है एंड द बेयर्स आर स्टिल टेकिंग कंट्रोल, देन इट इज कॉल्ड फॉलो थ्रू. जब ये अप मूव रहता है, इफ द बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल आफ्टर द रिवर्सल, देन दैट इज अ फॉलो थ्रू.
So in this case, in case of three black crows, so aapka it's a bearish candle pattern. So the bears need to be in control. Bears need to come ahead, go short, and push the prices even lower. So that is how you get a three black crows pattern. Then coming on to tweezers, ये आपके किचन में पाया जाता है, उसे टोंग्स कहा जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दो चपाती तवे पे रख के बेलते हैं या भूनते जो भी है, उसे ट्वीजर कहते हैं. सो बेसिकली होता कैसा है कि आपका एक प्रायर बुलिश ट्रेंड है, कंसिस्टेंट अप मूव है, एंड देन ऑन वन फाइनल डे, मतलब ऑन दिस डे, यू सी दैट द प्राइसेस अटेम्प्टेड टू मूव हायर, बट जो क्लोज था उसका कंपेयर टू द हाई इट इज स्लाइटली लोअर, मतलब पॉसिबल स्क्वायर ऑफ. Okay, and then the next day it is a flattish open, and again the prices attempt to move higher, but the bulls are not powerful enough to high. Now consider this, आपका एक green candle आपका यहाँ पर बन रहा है, मतलब the market was positive, square off, and close देखिए कहाँ पे आया, it is slightly below the high. The next day it was a flat open, थोड़ा up move रहा, the bulls tried to push the prices higher, but then they could not breach the previous session high, and then वहां से it came lower, and then the end was actually a negative candle. So यहाँ पर हुआ क्या, basically जो लोग ये कैंडल में स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए उन लोग probably ये कैंडल में स्क्वायर ऑफ कर दिए. And then because there is a square off, people who have gone long probably at this point of time, सभी लोग jump कर रहे हैं to square off their positions, and that is why you have a negative candle. Negative candle के बाद the bears immediately take a notice कि there is a change in trend because bulls are losing interest. So ऐसे टाइम पर क्या होता है, they start building upon short positions. एंड जब भी उन लोग शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करते हैं तो प्राइसेस गो डाउन इवन फास्टर. सो अगर आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट डे इट इज बेसिकली द कैंडल का रेंज जो है वो तकरीबन सेम है. नाउ दिस बिलो द प्रीवियस सेशन लो आल्सो, in that case you might find the candle actually making something like a bearish engulfing candle pattern also, but nonetheless आपका हाई जो है वो काफी सिमिलर होगा, एक 10-5 पॉइंट इधर उधर इज फाइन, बट देन इट विल नॉट बी एबल टू ब्रीच अबाउट द प्रीवियस सेशन हाई, मतलब वो हाई तोड़ के एकदम ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, इट विल जस्ट हॉल्ट द मूव देयर, एंड देन वहां से कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड्स आएंगे बिकॉज द प्राइसेस दे बिकॉज द बेयर्स दे कीप पुशिंग द प्राइसेस लोअर. ये तीन कैंडल पैटर्न अभी तक मैंने समझाए. वन वाज थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्रोस एंड ट्वीजर टॉप. यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेरी है प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, वील होल्ड फॉर लाइक 2 minutes एंड देन वील कंटिन्यू. So अभी तक we have covered with the this three black crows and three white soldiers, and this is the third, that is a tweezer top pattern. So अगर किसी को कुछ queries है anything, then they can put in the chat box, because this is the some of the important things as a if you are investing or trading into the market, then this is the must knows I would say कि that ये मालूम रहना चाहिए कि जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है, so what can be the result after this, whether you are following with the 15-minute charts or the 1 day charts or for the 1 month chart actually. So ये जब कैंडल्स फॉर्म होती हैं, so उसके आगे क्या मार्केट कैसे होने वाला है, हाउ then you can take the better informed decision. So अगर अभी तक किसी को कुछ क्वेरीज है इसके ऊपर, then they can put in the chat box. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई एम ग्लैड रोहित ने वो टॉपिक निकाला. सो जब भी हम लोग चार्ट देखते हैं ना, वी आर लुकिंग एट द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स, कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पर बुल्स क्या सोच रहे हैं, वो प्राइस पर बेयर्स क्या सोच रहे हैं, एंड हाउ दे आर एक्टिंग. दैट इज बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस इन प्रोबेबली 1 or 2 lines. सो अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ रहे हो, अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, जब मैं मार्केट की साइकोलॉजी बोल रहा हूँ मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ. अगर मैं निफ्टी का चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ, मैं निफ्टी की साइकोलॉजी नहीं समझ रहा हूँ, मैं उन ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझ रहा हूँ जो निफ्टी एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं. So when we try and analyze what the traders are doing, when we try and analyze what the bulls are doing at a particular point of time, एक particular price पर market participants का क्या reaction है, that is when you are basically doing technical analysis. And then वो कहीं ना कहीं आपको ये सारे chart patterns में दिख ही जाता है. So whenever there is an upper wick, whenever there is a lower wick, it just the candle very clearly tells you a story कि there is a possible square off. और देर इज अ पॉसिबल शिफ्ट इन द ट्रेंड. मतलब कहीं पे अगर समझिए एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है, वीक क्लोज है, विद वेरी लॉन्ग टेल्स, विद वेरी लॉन्ग अपर एंड लोअर विक. सो ऐसे टाइम पर आपको समझ में आता है कि जो मार्केट को होल्ड कर रहे थे इतने टाइम से, दे आर लूजिंग देयर ग्रिप और दे आर प्रोबेबली लूजिंग इंटरेस्ट इन होल्डिंग ऑन टू दैट पोजीशन. सो ऐसे समझिए कि अगर निफ्टी समझिए कि 21,000 से इट वेंट ऑल द वे अप टू 24,000,
24,000 पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि जिस दिन उसने 24,000 का हाई मारा उस दिन का क्लोज आया तकरीबन 23,700 23,800, मतलब 24,000 का हाई मारने के बाद देयर इज अ 300 पॉइंट ड्रॉप. नाउ अगेन ये सारे एग्जांपल्स हाइपोथेटिकल है. आई जस्ट वांट यू टू इमेजिन द कैंडल फॉर्मेशन इन योर माइंड. सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर 23,500 पर मार्केट ओपन हुआ, आई नो रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है बट 23,500 पर मार्केट ओपन हुआ, इट इज एट दिस पॉइंट, went to 24,000 all the way up to here, correct? So this is the open, this is probably the low, this is probably the high. वहां से settle कहाँ पे हुआ? 23,700, which is basically 200 points away from the low and तकरीबन 300 points lower from the high. So 300 points lower from the high जब मैं बोलूँ मतलब there is a probable square off. People who had gone long are probably squaring off. They are either satisfied with the profit or they are looking at below 23,500. मतलब imagine this candle and this upper wick is what we were thinking. Now I'll just show it to you in paint. Just give me a second. Yeah. So जैसे मैंने बोला, say for example 23,500 पर मार्केट ओपन हुआ, it went to 24,000 and 24,000 से हाई मारने के बाद it came down to 23,700. करेक्ट. सो जब ये 23,700 पर आया, बिकॉज इट टेस्टेड अ हाई ऑफ अराउंड 24,000, so it is going to have a bit of upper wick, correct? And because it opened at 23,500 and ended at 23,700, so the candle color is going to be green, correct? And then next day you see another candle pattern. Again ये वही प्राइस पर ओपन हुआ जहां पे ये क्लोज हुआ था. Just give me a second. Yeah. वही प्राइस पर ओपन हुआ जहां पर ये क्लोज हो रहा था. It attempted to move above this, but नहीं हुआ. And then it fell lower. Now एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि because it tested a high which is very similar to the previous session high, there is going to be an upper wick here also. And इसका क्लोज कहाँ पे हुआ? Below 23,500 despite opening at 23,700. So this candle is no doubt going to be a red candle. ओके ये आपको क्या स्टोरी बता रहा है कि प्रीवियस ट्रेंड हैज बीन पॉजिटिव, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे इट फाउंड सम स्क्वायर ऑफ, नेक्स्ट डे इट हैड अ फ्लैटिश ओपन, कि मतलब तभी ट्रेडर्स कंफ्यूज थे कि यहाँ से एग्जैक्टली हो क्या रहा है. एंड देन बुल्स वापस ट्राई करते हैं, प्रोबेबली इंट्राडे ट्रेडर्स दे ट्राई टू गेट इन द ट्रेंड एंड बट द बुल्स आर नॉट वेरी कन्विंस कि वो प्रीवियस सेशन का हाई तोड़े. एंड देन इट कम्स डाउन, it comes below the open and then it tanks to 23,500, below 23,500, where जहाँ पे ये ओपन आपने देखा था. सो बेसिकली इट यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ बेरिश engulfing because the bulls lost interest around this candle, the bulls again lost interest, the bulls did not have the energy or the stamina to push it above this level and then the bears took over. सो जब भी हम लोग कैंडल पैटर्न्स, जब भी हम लोग कैंडल स्टिक्स चार्ट्स की हम लोग बात करते हैं, वी आर बेसिकली लुकिंग एट द साइकोलॉजी, वी आर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ट्रेडर्स आर डूइंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस. So we will open up for we were open for Q&A, but again किसी को यहाँ तक कुछ query है, कुछ doubt है, please let us know. And I hope आपको clarity आ रही है and we are not confusing you. अगर ऐसा भी कुछ है तो please feel free to point it out. So Karan, there's one question that is how one can see this in the live charts using the 15 minutes or the 1 day chart. So सी टेक्निकल के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है या जो भी आप इंडिकेटर्स वगैरह यूज करो, दे आर ऑल वेरी ग्रैन्युलर. सो ग्रैन्युलर जब मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न अगर आपका वीकली पर बन रहा है, उसका सिग्निफिकेंस डेली पर भी है, उसका सिग्निफिकेंस आर्ली चार्ट पर भी है. But the point you have to keep in mind is the lower you go, मतलब आप जैसे जैसे आर के नीचे जाते हो, 15 मिनट जाते हो, 5 मिनट जाते हो, 1 मिनट जाते हो, the significance of that particular candle pattern also keeps on reducing, because एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, and this is something that I always like to emphasize on. जब भी आप चार्ट टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो, now this is basically a daily chart. I'll go on to an hourly chart. Okay, so मुझे यहाँ पे ट्रेंड पे थोड़ी क्लैरिटी मिली. I'll go on to 15 minute chart. Okay, ट्रेंड पे क्लैरिटी है, but then again there is some amount of noise in the chart. Now I'll go to 5 minutes, noise मेरा बढ़ते जाता है. So as and when you go on to the lower time frame, आपके चार्ट में noise बढ़ता है. Understand what the market participants are thinking, to understand what the market participants are doing, it becomes that bit difficult. How, why is it becoming difficult? So the simple point is, every minute there is some or the other trade that is happening, and every minute अगर आपको gauge करना है कि क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, it is going to be a difficult task for you. Obviously it is going to be a very difficult task for you. Then आएगा कि
ओवरऑल 1 घंटे में ये हो रहा है, सो इट इज दैट बिट लेसर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस, एंड बिकॉज योर इन्फॉर्मेशन इज lesser, your processing will be a lot faster. So 15-minute chart per is really it is a perfect balance between properly showing trend and noise. Not strictly, because again it's a personal choice, but I personally would not advise going below 15 minutes. Now I know of people who use 1 minute charts to, and I sympathize with them, I empathize with them, but I personally have never been able to do that. सो मेरा लिमिट जो है वो 15 मिनट पर पुल होता है, एंड द आइडियल चार्ट और सो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, वेल एंड गुड. Yeah. So thank you, the participant who asked this question. Yeah. So Karan, we can move forward now. या सो विल टच बेस ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो ट्वीजर टॉप हम लोगों ने बोला था. सो ट्वीजर टॉप मैंने आपको बोला कि हम आपके वो जो किचन में जो apparatus है, you can simply google what a tweezer is and you will be able to find what a tweezer is. So consider this, जब भी आप उसे उल्टा पकड़ते हो, it basically forms like a mountain kind of pattern. मतलब ये point पर there is that joint and this is how you move it. Now a tweezer bottom is just the opposite. ट्वीजर बॉटम, आप ट्वीजर को ऐसे पकड़ोगे तो मतलब उसका जो मूविंग पार्ट है वो ऊपर रहता है, एंड देन देयर इज दिस कनेक्टिंग पार्ट. सो दैट बेसिकली इज अ ट्वीजर बॉटम पैटर्न. सो ट्वीजर बॉटम को आप ऐसे समझ सकते हो, कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड रहा है, एंड एक ऐसे पॉइंट पर द बेयर्स आर लूजिंग इंटरेस्ट एंड द बुल्स स्टार्ट टेकिंग नोटिस ऑफ इट, and that is when the bulls they come in very hot, and then that is what pushes the prices higher. So ये जो कैंडल पैटर्न जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब कंसिस्टेंट डाउन मूव, बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न हियर वेयर बुल्स आर लूजिंग कंट्रोल, वेयर the bears are losing control and the bulls are coming in hot, and the price is going higher. So that basically is a tweezer bottom pattern. So as Karan rightly mentioned कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया करण ने, that is in terms of कि tweezers, if you have to analyze कि top या bottom क्या होता है. So जैसे कि आपके घर में this हम लोग उसको बोलते हैं जिसको रोटी जिसे पकड़ते हैं, that is your चिमटा actually, or I would say the मोचनी actually. So that is basically, and that's a quite relatable actually to our household कि जहाँ पे one can understand कि that हाँ ये अगर ये पैटर्न अगर फॉर्म कर रहा है, then what can be the output of this. So that's the real meaning of the tweezer, that अगर tweezer top bottom form करता है या tweezer bottom form होता है, so एक bottom form के बाद okay how this like up trend starts, और अगर top pattern form होता है तो कैसे अपना रिवर्सल आता है, that is a down trend starts. So one need to ensure कि कैंडल का कैसे विक आ रहा है, एंड साइमल्टेनियसली उसका अगर like 3 bottoms बना है एंड देन ट्वीजर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, so one can relate it कि that yes, if I'm watching the 15-minute charts, so वहां से I can relate it कि that yes, basically अभी ये पैटर्न फॉर्म हुआ है तो now it will be like the uptrend, because then you are sure about this market, you are sure about this like the following the means the trend actually. So as I mentioned always that trend is your friend actually, so you have to follow like the other indicators also to get like the correct ideas that how the this technical chart works, instead of like depending on like one or two patterns, or I would say like the one or two indicators. Yeah, Karan, all over to you. सो एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये जितने भी कैंडल पैटर्न्स हैं, दे आर बेसिकली दे गिव यू अ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट कुड हैपन, अ पोटेंशियल ऑफ व्हाट कुड हैपन. So none of these candle patterns are like that lantern that you just rub and Aladdin comes out. यार कोई डोरेमोन का पॉकेट नहीं है. So one thing that you have to absolutely keep in mind is ये जितने भी patterns हैं, they are based on psychology, and psychology can go bust in like no time. So whenever you are placing trades, then make sure कि आपके psychology या everything is just a part of your analysis and not the entire analysis. So अगर मैं आपको बोलूँ कि if I'm explaining RSI to you and आप बोलो कि मैं प्राइस नहीं लूंगा, सिर्फ RSI पे ट्रेड करूंगा, then that's wrong. The same thing goes with अगर मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूँ without looking at where my supports and resistances are या what my candle is telling me, then that is wrong. So you should always have a perfect blend of everything. So that is why the thing about a balanced diet, that is where it comes from. Then we move on to technical indicators. Now अगर आपको पता होगा कि हर इंडिकेटर का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एंड so one thing that always has caught my mind is maths and codes जब मैं बोलूँ तो कंप्यूटर कोड्स जो भी होते हैं, they are one of the purest things because they never lie. जो फैक्ट होता है वही दिखता है. So when you add these price data, when you put it in a mathematical formula, it gives you a final output.
एंड दैट आउटपुट कुड बेसिकली बी एनीथिंग कि आप इसको अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो वो मैटर करता है. सो yeah, so basically think of it like this. अगर आप मूविंग एवरेज ले रहे हो, इट इज बेसिकली अ सिंपल मीन. सो अब मीन जब ये देख रहे हो कि से फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है जहां पर 10 लोग बैठे हैं एंड वो 10 लोगों का हाइट आपका आपके पास इंफॉर्मेशन है. अभी वो इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to probably 1000, आई डोंट नो, बट वो एक ब्रॉड रेंज है. बट आपको अगर डेटा को एनालाइज करना है, यू हैव टू पुट इट कम विद मीन, मीडियन. आपको स्क्यू देखना है कि ज्यादा करके सेंटर कहाँ पे था, आपका बेल कहाँ पे जा रहा है, योर वेर योर कर्व इज, whether it is skewed towards the right, whether it is skewed towards the left. So that is how you interpret numbers. So मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब भी आप ये प्राइजेस को प्राइजेस पे अप्लाई करते हो, दैट इज व्हेन यू डिराइव योर इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स बेसिकली आपको एक ही ध्यान में रखना है कि दे विल हेल्प यू मेक योर डिसीजन लाइक एनी अदर टेक्निकल टूल. सो एंड अगेन अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस देख के, बिकॉज अभी मैंने आपको मूविंग एवरेज का एग्जांपल दिया, अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज विदाउट प्राइस देख के अगर आप ट्रेड करोगे, देन God bless you. But again, when you mix these things together, that is when you come to a perfect analysis. So यहाँ पर हम लोगों ने RSI का एग्जांपल दिया है, MACD का एग्जांपल दिया है. Now these are certainly concepts that we'll be explaining further. एंड आज के सेशन में भी अगर आप देखोगे, सॉरी आज के राइटअप में भी अगर आप देखोगे, वी हैव डिस्क्राइब्ड और डिवाइडेड एवरी सिंगल इंडिकेटर इनटू फर्दर कैटेगरीज. सो जब भी हम लोग बोलते हैं कि यू नो वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर इंडिकेटर, सो इंडिकेटर कैन शो यू ट्रेंड, इंडिकेटर कैन शो यू मोमेंटम, इट कैन शो यू वॉलेटिलिटी एंड ऑल्सो वॉल्यूम के बेसिस पे भी थोड़े इंडिकेटर्स होते हैं. सो ट्रेंड का क्लासिक एग्जांपल है इज अ मूविंग एवरेज. सो अगर यहाँ पर ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट है, आई जस्ट पुट मूविंग एवरेज, simple moving average, and I go to the daily chart. Yeah, so this line will basically show me कि पिछले XYZ days का अगर मैं डेटा लूँ तो what has been the trend. Correct. Now this by default is a 9 period moving average, a simple moving average. So basically ये 9 days का closing price ले रहा है and then adding it up and then dividing it by 9. So that is how we that is how we derive the line. Now line मैंने आपको पहले बोला है, so line अगर आपको draw करना है, you require dot plots, and the moment you connect those dots, that is when you get a line. So that is how a moving average is derived. RSI का अपना formula है. We'll come to that when we explain RSI in detail. We'll come to moving average, convergence, divergence, ABCD. When we give you a write up on that, हम लोग उसको डिटेल में explain करेंगे, analyze कैसे करना है. एंड ओके, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. नाउ दैट वी आर ऑलरेडी वी आर टचिंग ऑन इंडिकेटर्स, आई वुड लाइक टू नो कि अगर आप RSI यूज कर रहे हो, व्हाट वुड बी द मोस्ट कॉमन मेथड जहां पर आप उसे यूज करना पसंद करोगे. हाउ वुड यू यूज एन RSI से ऑन अ डेली चार्ट और अ 15-minute चार्ट. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल, सो स्टार्ट टाइपिंग योर आंसर्स. एंड इन द मीनवाइल अगर किसी को कुछ ट्विजर टॉप्स, ट्विजर बॉटम्स या आज तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में डिस्क्राइब किया है, अगर उसके बारे में भी कुछ पूछना है, देन वी आर ऑल ईयर्स. So those who are attending this session from a WebEx channel, there are many participants are attending from WebEx also. So they can type their answers or related to the technical analysis queries on the chat box. So we are happy to hear your feedback so that we can improve much more better on this. And Karan, there is a question that if you can just again repeat the question what you asked. Yeah, so question was कि अगर RSI आपको यूज करना है, डेली चार्ट हो, 15-minute चार्ट हो, whatever time frame, how do you use RSI normally? अब RSI कैसे यूज करना चाहते हो, कैसे यूज करते हो या कैसे यूज करना पसंद करोगे, या हिस्टोरिकली आपने आई एम श्योर यू माइट हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वीडियोस. सो कैसे आप RSI के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि मोमेंटम क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है. How would you analyze RSI? So RSI levels basically like what you see in the hourly or into the daily chart. तो एक पहले भी आई एम श्योर काफी लोग ने RSI यूज किया होगा. If you don't understand anything about the RSI, just type के like no, we don't understand. Yeah. So at least means in the upcoming week we'll be sharing you the in-depth details about the RSI.
So do remember that is every Monday to Friday. Okay, we release the notifications through like you receive the notifications, and this means on the your mobile app, that is the Ring mobile app or the Axis Direct mobile app that you are using it. So वहाँ पे आपको हमेशा notifications आता है कि that ये आज का concept है and you have to read it. So after this all things get published in our website also. So under simpleaccessdirect.in, under this learn section, there is a good read section is there. वहां से जाके you can explore it and you can update your knowledge, you can upgrade your knowledge, I would say, in that basis. So So we have an answer. So Vikramjit एक has जो correctly हमारे mentioned. yeah. So 70-30 threshold. So Vikramjit, so this is a fun activity that we'll do. So जब भी हम लोग RSI की बात करेंगे, हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि whenever so जब भी आप 70-30 बोलते हो, if you could just give me a bit more detail, so that जब भी हम लोग ये एनालिसिस करेंगे हमारे पास ये लॉजिक होगा. So we'll give you a performance metrics of what the index has done based on or what. चलो निफ्टी पे हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे. अगर आप 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड बोल रहे हो, so how has the returns been? अच्छा है बुरा है ये हम लोग को पता चल जाएगा. So जो हमारा सेशन अभी वेबएक्स से भी अटेंड करे, दे कैन ऑल्सो पुट इन द चैट बॉक्स कि इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द आरएसआई or you like there is a poll running in our YouTube channel that is the concept of the day. PDF is are helpful for you. So most of you have voted that yes, it is helpful. So thank you so much for this. Coming back to the chat option, that is Vikramjit has correctly mentioned that is we can gauge price time to buy now or sell as price is overbought or oversold. Yeah, correct. All over. Understood. So ये जो 70-30 का threshold है, I'll get to my team and अगर हम लोग को compliance का approval मिलता है, then we will run a performance metrics that says कि अगर जैसे ही RSI 70 के नीचे आ जाए and I go short and I hold on to my short position till it goes below 30 and starts crossing above 30. So basically ऐसे होगा कि अगर मैंने समझे कि ये लेवल पर तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा. सो बिकॉज यहाँ पर RSI कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये लेवल पर अगर मैं शॉर्ट करूं, मतलब RSI 70 के ऊपर था एंड नाउ इट इज गोइंग बिलो 70, मैं उसे शॉर्ट करूं एंड आई होल्ड ऑन टू दैट पोजीशन टिल दिस लेवल, बिकॉज ये 30 के नीचे गया एंड देन वहां से इट इज टर्निंग एंड गोइंग बैक अबव 30. सो वहां पर ये पता चल रहा है कि आपका ओवरबॉट से इट स्टार्टेड गोइंग इनटू द रेगुलर ट्रेडिंग टेरिटरी से इट वेंट डाउन, आपका ओवरसोल्ड में गया. So इसका एक only like let's say for me the best technical indicator for me it is working right now, that is a RSI moving average crossover and followed by the Bollinger Bands. But for you it can be the other thing. So those who are attending this session, they can type it that okay, what are the major indicators you are looking out for to learn and to get educate yourself, because this is the kind of like the interactive session. हम लोग interactive session ये every Monday to Friday हम लोग concept of the day release करते हैं, Friday को ये हम लोग अपना ये sessions रखते हैं कि that whatever the things we have showed to you means through our this PDF we can explain you in detail during our webinar. So अगर किसी को कुछ क्वेरी है किसी इंडिकेटर के ऊपर बारे में, देन ऑफ कोर्स यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स बारे में, देन ऑफ कोर्स यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स. सो अगर जो वेबएक्स अटेंड कर रहे हैं दे कैन पुट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, एंड जो यूट्यूब से अटेंड कर रहे हैं देन ओके. सो वेबएक्स से वी हैव गॉट लाइक द फर्स्ट दैट इज सुपर ट्रेंड के बारे में समझना है, दैट इफ यू कैन जस्ट ओवरव्यू ऑन दिस लाइक सुपर ट्रेंड कैसे करते हैं, या तो फिर हम लोग ये नेक्स्ट सेशन में लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी लाइक we have passed out with the time. So I would suggest like a super trend, of course we can super take trend, it in we can certainly we can take on the next week, yeah. that is on next week again we are releasing the our concept of the day PDF. So again on the 10th of January
we'll take this and So means what I would suggest is we have a flow planned. So अगर उसमें we'll certainly add super trend to it, but we'll not commit कि ये शायद 10th को ही हो, because we'll go step by step. And उसमें सबसे पहले जो है हमारे momentum indicators आते हैं. Trend is a bit on the lower side. So we'll go with the flow, and जैसे जैसे हमारे write ups बनते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे concept of the day launch होते हैं, रिलीज होते हैं, सॉरी नॉट लॉन्च होते हैं, रिलीज होते हैं, विल एक्सप्लेन सुपर ट्रेंड, विल explain, we'll try and explain VWAP and all those things. we can explain in our webinar, means in case like we'll not cover into the PDF, as Yeah. Karan rightly mentioned, that everything is going in the flow, like how we learn A B C D E F G. we मतलब हम लोगों ने पहले A B और डायरेक्टली X Y Z नहीं लर्न किया था. So how we went like A B C D 3 A B C D E F G. So that's why we have made this technical analysis in a very simple layman language, that every person who is coming from any other background, like from the non-finance background also, should understand कि technical analysis work कैसे करता है. But definitely Mr. Kishore Reddy ji, that we are going to cover the super trend in a webinar. That's our next week, because we are running out of the time right now, as it's a power pack 30-minute session. So stay tuned and do join us for the next week, that is means on Friday at 2:30 p.m. again. Also do like us or this YouTube channel on this Access Securities Limited, and hit the bell icon so that you can receive the notifications whatever the webinars we are doing it. या सो बेसिकली अगर हम लोग फ्लो में जाएंगे तो आपको न्य जो है वो आप मिस नहीं कर, सीरीज देखा है, दे विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. So Bikramjit ji, I would ask Karan to open just our simple accessdirect.in. Now, last month we have released many of our PDF, that is means on the options part की, especially options क्या होता है, options के call put क्या होता है. So there is a learn section in our website. Okay, if you go into the e-classroom, you can find all our upcoming sessions that is there. So for example, in case you miss the this like the webinars की अगर mailers नहीं आया for example, और लेट्स से आपको कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया, देन यू कैन वॉच हियर. सो बाय एंड ऑफ द डे, अभी नेक्स्ट वीक का ये यहाँ पे पूरा कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट वीक में अपने हम लोग के कौन कौन से वेबिनार्स हैं. तो यू कैन जस्ट गो हियर एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ. सेकेंड, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक द मींस पीडीएफ और द गुड रीड्स. सो एक पीडीएफ होता है जो आपको एवरी डे आता है, दैट इज थ्रू पुश नोटिफिकेशन. बट इन केस यू आर मिसिंग दैट, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस गुड रीड सेक्शन, एंड यहाँ पे यू कैन सी द ऑल द blogs that we have already updated here. So ये options के ऊपर है, and sooner like the technical analysis का जितना भी हम लोग ने release किया है, it will be get updated here. So you can just go and click here and upgrade your knowledge on the this options, I would say, or the technical analysis. So you can go under the learn section, and learn section के अंदर you can explore the good read sections, and all our good reads are updated here, what we are releasing it to all our customers. So this is already updated here. So concept of the day, Vikramjit ji, that is, I mean, basically like to engage, or I would say like to give the knowledge on every part that what we are releasing it. So every day we are having a simple small topic like to give the knowledge कि हाँ ये exactly इसका meaning क्या होता है. So आज का जो है जैसे कल जो हम लोग ने release किया, that is about the technical indicators. सो वो ऑलरेडी लाइक पब्लिश हो चुका है, एंड आज हम लोग का अगेन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रहेगा. वैसे नेक्स्ट वीक के लिए अगेन देयर आर द मोर अपकमिंग लाइक द कंसेप्ट ऑफ द डेज विल बी देयर ऑन द टेक्निकल एनालिसिस. सो अगर कुछ और लाइक इफ एनीवन इज लुकिंग आउट फॉर अदर थिंग्स आल्सो, दे कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स, and of course we will be happy like to create the blogs or give the view of like अगर कुछ research view है, then of course we can go ahead, but not related to the stocks actually. Okay. As this the webinars is specifically for the educational purpose. Yeah. So we have run out of time. Thank you guys for joining in. We'll take any further queries in the next week's session. Yeah. So thank you everyone for attending the today's session and taking out the time. And I means do join us for our next session also.
and do hit the bell icon and means subscribe the channel so that you get notification for our this upcoming webinars. So Ranko chart is again one of the thing that we have to cover. Of course, we'll be covering on this. सो रेंको चार्ट एक बात आपको बोलता हूँ कि इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉमनली यूज्ड चार्ट. सो रेंको, पॉइंट एंड फिगर, हाइकेनाशी, ये सब जो है वो अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही है ओनली देन विल कवर, नहीं तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू लेट इट गो. So Ranko is basically, I believe that is a bricks जो form Yeah. होता है. That is a brick chart. So candle, I think like is one of the best Yeah. like cover. But of course, we take your feedback and it's definitely in the next webinar we're going to showcase you. We're just going to touch on this like Ranko chart क्या होता है, and of course in the PDF also we can add this about the blocks that Ranko क्या होता है. So we'll do this. So with this, thank you so much everyone for taking out the time, and we'll see you on this Monday at 12 p.m. Yeah. on the Market Outlook, and do register for the upcoming webinars from the website. So thank you so much. I like Hikenashi. Okay, sure. Definitely we're going to cover algo trading. Okay, noted for this part. Algo trading is okay. We'll try. That's our options actually. Yeah. So thank you everyone for attending today's session, and very happy weekend to all, and we'll see you that is on next Monday Yeah. at 12 p.m. Thank you everyone. Thank you for joining in.